What makes us superior beings? Is it our ability to calculate and design? Is it our strength that keeps us at the top of the food chain? Or is it because we can value life beyond the parameters of just survival? Sometimes care for others is just about the denial of being rational. This happens when we leave our comfort zone to support people we don't even know. This strange behaviour makes us human beings. Bigger challenges give rise to even bigger heroes. Bodies take the toll and nerves are put to the test. Ordinary becomes extraordinary, and mere existence turns out larger than life. Floods in Pakistan in year 2010 caught the global focus among several social welfare organisations. LA Humanitarian and Development Programme, along with its partners, stood in the front line with the communities. ये कोशिश है जो हम कर रहे हैं, हमारे साथी कर रहे हैं, हमारा कारवां कर रहा है, और ये कोशिश पिछले 27 साल से हो रही है और लोग मिलते जा रहे हैं, काम आगे बढ़ता जा रहा है, जद्दोजहद हो रही है. The word monsoon has different meanings for these poor communities. Indeed, water is a blessing, yet its mismanagement gives devastating blows to the infrastructure, livelihood and economic growth of disaster-ridden communities worldwide. In Pakistan, the majority of IDPs seek temporary refuge in relief camps. In combination with poor health and hygiene conditions, humidity and an inadequate supply of medicines causes an outbreak of infection. Sadly, for some, this mandatory trip becomes their final expedition. With the mission of improving living conditions of flood-affected communities, LHDP and its partners initiated an early recovery project in January 2011. हम यहाँ पर 4 यूसीज में काम कर रहे हैं और 4 यूसीज में बड़ा प्रोजेक्ट हमने किया है कि हम 11,500 फैमिलीज़ को सपोर्ट करेंगे इस पूरी इंटरवेंशन में. इट मीन्स कि तकरीबन 1 लाख लोगों को हम इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में. इस प्रोजेक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स हैं हमारे 2 मेन. वाश में हमारे पास जो टारगेट्स हैं उसमें ये कि जो वाटर पे हम काम करना जा रहे हैं उसमें न्यू हैंड पंप्स जो इंस्टॉलेशन है 4 यूसीज में हमने 400 न्यू हैंड पंप्स इंस्टॉलेशन का काम जारी है हमारा. और उसके साथ साथ 800 जो हैंड पंप्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है लेकिन वो डैमेज हो चुके थे, उनकी भी रिपेयरिंग हम कर रहे हैं. उसके साथ हमारे जो पीएचपी स्टाफ है वो 4 यूसीज में काम कर रहा है और उसमें हमने तकरीबन जो है 4000 हाइजीन किट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है. और उसके साथ हमने स्कूल्स में भी काम किया है, बच्चों के साथ बच्चों को वो वाश एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया है. और तकरीबन 33 स्कूल हैं प्राइमरी गर्ल्स और बॉयज़. उसके सिवा जो हमारा है वहाँ पर हमने कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया है कि पर विलेज हमारे जो 4 यूनियन काउंसिल्स में तकरीबन हमारे पास 1334 वॉलंटियर्स हैं जिसमें से 50% फीमेल है. Community health volunteers not only give initial medical aid 24/7, but also educate patients about safer health and hygiene practices. In the other component, deserving communities were given cash for work, which they utilised in the reconstruction of village infrastructure, irrigation channels and pathways. Villagers were paid for this labour work. Unconditional cash grants were also given to badly victimised individuals, disabled, widows and families with virtually no other source of income. साईं इन्हनि जो महिरबानी आहे असांखे गंज ॾिनो लाड़ वारनि साईं जीअं आया असांजो नालो लिखी विया असांखे ॾिनो कैश वर्क ॾिनो 4,500 असांखे मिलियो. बिज ॾिनो भाण ॾिनो असांखे
जेको बि शइ असांखे ॾिनो सही तरीक़े सां ॾिनो। हिन महिल असांखे चेक ॾिनो, हाणे 13,500 जो कुकुड़ मिलियो असांखे। साईं असां ख़ुशि आहियूं बिल्कुलु हिननि जी तरफ़ां। असांखे जेके बि ॾिनो असांखे सही ॾिनो। It's a tragic reality that in a region blessed with such fertile soils, poverty and hunger are still common. सबको पता है जो ये इलाका सारा डूब गया था, माली भी गया, जानी भी गया। मतलब इधर जो फसल तैयार था इधर था फसल सारा गया। तो ये खर्च से इधर बना था ना, ऐसे नहीं था तो वो खुद नहीं बनकर इधर आया। इसका मजूरी था, रोंबे का था, वो हल का था, धान का था, बिज का, वो सारा ही ख़त्म हो गया। अभी तो माशाअल्लाह ये आपकी मदद से इधर तक पहुँचा है। अभी अल्लाह आपको भी देगा, हमको भी अल्लाह ही देगा। जब ये फसल तैयार होकर कटाई होगा तो हमारे से वो खुद से ही पैदा करेगा। Numerous cash grants were also given to support individuals who either re-establish or set up new small-scale businesses. सर बस कम इहो ई आहे जेको हाणे हिते ख़राबु थी पियो, पाणी आयो बोर्ड में, सामान हिते ई पियो, सॼो ख़राबु थी वियो। इन सखर में माना हाणे पैसा मिलिया, ठारायासीं, तक़रीबन माना कम से कम 11,000 खनि ख़र्चो अची वियो आहे हिन जे मथां। हाणे माना कमु सेट थी वियो आहे, हाणे शुक्र आहे रोज़ी सुठी थी थिए। Women are the backbone of our rural income generation system. Ironically, they are the ones who enjoy least of the feast. LHDP emphasises the equal participation of both men and women in all the project activities. With scarce and far-off distant water resources, rural women have to travel as much as 8 kilometres carrying up to 40 litres of water for household purposes. This daily mandatory trip outside the village boundaries also jeopardises their safety. The driving force behind the success of LHDP's programmes is youth participation. Child-to-Child Health Club is an example of such intervention where children learn how to wash hands, use the toilet, kill bacteria in the water, and make ORS using simple things such as salt and sugar in the right proportion. The journey from injustice to justice, from poverty to prosperity, is very long and not without its toil and pain. At LHDP, every obstacle is taken as a challenge to overcome. We've been working together for about 3 or 4 months. When we started, the team was very new, so we had to do a lot of orientation, a lot of training. But they have learned a lot and they are willing to learn. And the amount of work that we've achieved in quite a small amount of time has been really impressive. They are willing, they work many extra hours on the weekend, in the evenings, so I've been really impressed. Men and women are constantly challenging the gender paradox to sketch realistic solutions. Communities are boarding a single bigger platform. Here, individual visions are shared and refined to form village-level missions, leading to collective strategies and a win-win plan.